उनको लोग जनता उनको प्यार से शिवलिंग साहब बोलते हैं, क्योंकि हाँ जी शिवलिंग साहब इसलिए बोलते हैं, उनको हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में एक हार्मनी लाने के लिए और हर प्रकार की लोगों को एक इज्जत देने में उनका जो विशेष पार्ट रहा, उसके लिए लोग इस प्रकार से बुलाते हैं शिवलिंग साहब। और आपने होली का बहुत सारे कम्युनल हार्मनी प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते 25 साल से करते आए हैं। उनको एम्बेसडर ऑफ गुडविल के रूप में इजराइल में भी उनका एम्बेसी से निमंत्रण मिला, मुस्लिम्स ज्यूस में एक प्यार की माहौल बनाने के लिए। इनका पढ़ाई में जो प्राप्त किया टेक्निकल सपोर्ट ECIL से, इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट में भी उनका सहयोग रहा है और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैफिक सिस्टम से दिल्ली के लिए भी उनका सहयोग रहा, टेक्निकल एक्सपर्टाइज। बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते भाई साहब, कम्युनल इंटीग्रिटी डाइवर्सिटी को एनकरेज करने के लिए। जर्मन यूनिवर्सिटी से भाई साहब को डॉक्टरेट मिला है, लेकिन किस कारण से वो इंडिया को नहीं लाना चाहते हैं, तो फिर अवार्ड से सम्मानित किया है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी भाई साहब को अवार्ड भी दिया है उनका एक्टिविटीज़ कम्युनल हार्मनी की एस्पेक्ट में पीस की तरफ से। 9th निज़ाम रौनक साहब को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथ में कुलदीप दीदी से भी उनका बहुत बहुत अटूट रिस्पेक्ट है, प्यार है, क्योंकि दीदी का जो स्वच्छ भाव है, तो दिल की भाव है, भाई साहब ने स्वीकृति दिया है, तो दीदी का और अन्य ब्रह्मा कुमारी मेंबर खुशियाँ मनाने का मौका है, उत्सव का जश्न करने का। तो सबसे पहले का रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी बहनों को मैं निमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे बीच में आएंगे और खेस के द्वारा और उनको गुलदस्ते के द्वारा सम्मान करेंगे। तो बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो आएंगे और साथ में विष्णु स्वागत करते हैं और साथ में विष्णु प्रिया बहन बहुत सुंदर गीत कोई राह आसान चाहिए, ना हमें अपनी कोई खास पहचान चाहिए। बस खुदा से दिल से दुआ है हमारी यही कि आपके चेहरे पर ऐसी ही प्यारी सी मुस्कान चाहिए। और इसी मुस्कान के साथ परी ने बहुत सुंदर डांस हमारे बीच में रखा, सबके चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान आ गई। अभी कार्यक्रम को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला पाक है और जो नेक बंदे होते हैं सच्चे दिल से उसकी इबादत करते हैं, तो पाक परवरदिगार उस पर अपने परमादरणीय अपने घर में अपनी बहनों के द्वारा रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए आए हैं। ये रक्षाबंधन का पर्व हमें याद दिलाता है विश्व बंधुत्व की भावना, क्योंकि आज तक इतिहासों में सुनते आए थे कि
मुस्लिम भाइयों से भी बहनों ने रक्षा का बंधन बांधकर इस प्रेम के बंधन से उन्होंने कई प्रकार के देश की जो क्या कहें आधीनता से मुक्ति दिलाई, और उन्होंने भी अपनी बहन मान करके उनका सम्मान किया। तो इस तरह से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसका रक्षाबंधन के पर्व का बहुत सुंदर आध्यात्मिक महत्व बताते। लौकिक में बहनें अपने भाई को तिलक देती हैं, फिर राखी स्थान हम सबका रूहानी नाता है। रूहानी नाते से सभी हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट का हो या किसी भी नेशन का हो, हम आत्मा रूप में एक पिता के बच्चे हैं। चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स के प्रोग्राम में जबकि चीफ जस्टिस जी भी थे और भी कुछ जजेस थे, हमारी आशा दीदी, ब्रिजमोहन भाई भी थे, तो बहुत सुंदर कार्यक्रम में अपने सब कुछ बताया। लेकिन जब पहली बार भाई साहब आए थे, हमें बहुत उत्सुकता थी कि हमने राजा निज़ाम जी के बारे ये बॉर्डर निकाल दो, तब आप मेरे से मिल सकते। दूसरा, रक्षा का बंधन। लौकिक में भाई को कहा जाता है मेरी रक्षा करना। जैसे बताया, मुस्लिम भाइयों ने भी हमारी हिंदू नारियों की रक्षा का बंधन लिया, लेकिन ये रक्षा बहन की नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी हम देखते भाई तो छोटा सा अभी बेबी है और बहन इतनी बड़ी है, उसको राखी बांध रही, अब वो भाई क्या रक्षा करेगा? बहन देश में, भाई विदेश में, वो कहाँ से आएगा हमारी प्रोटेक्शन के लिए? लेकिन ये राखी का सूत्र जो है, एक तो प्यार का बंधन है, दूसरा पवित्रता का बंधन है, और इस राखी में हमें स्वयं की रक्षा करनी है बुराइयों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आदि जो भी बुरी आदतें कहो, बुरे संस्कार कहो, जो इन 5 विकारों से प्रभावित होकर हम इन विकारों से ग्रसित हुए हैं, इनको अपने अंदर से निकालने की प्रतिज्ञा करनी है। तो आज से हम ये प्रतिज्ञा लेंगे, हम अपना जीवन पाक बनाएंगे, औरों के जीवन को भी पाक बनाने की हम प्रेरणा देंगे। फिर हम भाई का मुख मीठा कराते हैं। मुख मीठा कराना माना क्या होता है? दुनिया में मुख मीठा कब कराते? कुछ शुभ दिन होता है, कुछ शुभ समाचार होता है, आपका जन्मदिन है, आपको कोई विजय हासिल हुई, आपको सफलता मिली, तो बोलते भाई मुख मीठा कराइए। तो परमात्मा भी कहते जो बच्चे नापाक से पाक बनते हैं, उन आत्माओं को मैं पाक स्थान अर्थात सतयुगी दैवी दुनिया की मिठाई खिलाता हूँ कि आपका मुख मीठा रहे, सदैव मीठा बोले, सभी के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करें। और दक्षिणा में हम लेते हैं, हम लोग जो है ना पहले ऐसे बोलते थे, 1 आना और 5 खोटे पैसे। जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो हमारी बहनों ने कहा हमें 1 आना चाहिए और 5 खोटे पैसे। तब उन्होंने बोला वो तो करेंसी चेंज हो गई है, खोटे पैसे तो हम रखते नहीं हैं, लेकिन अगर हम आपको बता दें तो आप देंगे क्या? आपके पास है वो? तो उन्होंने कहा बोलो, मैं बता, अगर देने लायक हूँ तो जरूर दे दूँ। तो 5 खोटे पैसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दे दो। की सभा है, हम सब होवनहार, हम सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं। यहाँ तो हम राजयोगी, राज ऋषि हैं, और इस तपस्या के द्वारा परमात्मा हमारी प्रमोशन नई दुनिया में करते, उस सतयुगी दैवी दुनिया में आपको भी आने का हार्दिक निमंत्रण है कि आप सतयुग में भी राजा बने, क्योंकि ये राजयोग राजाओं का राजा बनाता है। सर्वप्रथम हमें अपनी स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज्य करके स्वशासक बनना है, तभी हम इस दुनिया में भी कुशल प्रशासक बन सकते और आने वाली नई दुनिया में भी कुशल प्रशासन हम कर सकते हैं। तो आज हम यही कहेंगे, हमारे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे इस परिवार को नहीं भुलाना। ये आपका परिवार है,
इस परिवार में आपका दिल से बहुत 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 अभिनंदन है। तालियां बजाकर अभिनंदन करें। Almost just listening to them is like meditation. They don't even have to taught me from the first time I came here. Firstly, it was the building itself, the campus. It was so serene, and there's an atmosphere which makes you feel like you are already into some kind of meditation because of the greenery and cleanliness. And then the next thing that hits you is the people, and they are so loving, caring, and they don't have any barriers. They seem to have no ego and competitiveness within each other. So they're just, I don't know how they've come to be like that. I think once they join, they become like that. And I'm sure Kuldeep Didi is being exceptional. That's why she's the head of this organization. So she can't be a head just like that, just by fluke. So she must be, except she's exceptional, so I don't feel so bad about it that I can't compete with her in terms of the serene way she talks and all that. And my confusion is I use two languages, like the local Hyderabadi and English. So if I'm restricted to just using words from one language, I get little, it's a bit of a curve for me. But I'm very happy to be here, and I'm feel fantastic that I discovered this place. And now I've come back. The first time I came here, the strange thing was we were trying to see how I'm related to the Nizam. So we were finding ways and trying to say, so and so's, he was my grandfather, great grandfather, this, that. Now suddenly next thing my family chose me as the Nizam. So basically it's like, you can say there's no Nizam of Hyderabad as such, because there's no real king now, because India is independent now. So also there is a kind of democracy which chose me. So, since there was no, after India joined, Hyderabad joined India in 1948. And in 71 there was a rule that they abolished all kinds of. So from that time till now, we don't really have a official kind of a person. So now there's something like a democracy where the families are allowed to choose. Legally or technically, they're allowed to choose their heads. So in a formal way, they chose me. So I'm really delighted. And what is surprising is when I came here last, I was not the Nizam. And now within no time, I've come back again, and now I'm the Nizam here. So easy trying to say I'm the Nizam than trying to say how I'm related to the Nizam, which was the case the last time I was here. And they called me to congratulate Mr. Bhuyan, Justice Bhuyan, let's say. And he had just come in, and they blessed me and they blessed Mr. Bhuyan. And soon after, Mr. Bhuyan got elevated to the Supreme Court, so which is probably an elevation because that's happened later. First he was the Chief Justice of Telangana, so I thought that was big enough. So obviously shifting to the Supreme Court is even more superior to that. So you can say he got blessed because not everybody makes it to that. And not everybody makes it to becoming a Nizam like I did. Whether in notional or in reality, it's not at all easy. And I think part of the blessing is to do with this place. And I do have that feeling. Somehow sentimental about it. So maybe I'm imagining it, but doesn't matter. As long as I'm imagining and I'm feeling this place had something to do with it. That's what's important. Especially in the spiritual world, it's not a mathematical calculation at all. So I'll end with that. And last time I was talking a lot because I'm not good at speaking. Today I think the best I've managed in a whole year, speaking so far on my own. Normally I'm okay if they ask me a specific question, then I can answer that one question and then move to the other. On my own I rarely talk like this for about 5-10 minutes. And today I think I should clap for myself that I managed without getting awkward and embarrassed. But that's the comfort you people give me. The only thing that defeats me is the fantastic language Kuldeep ji and everybody uses. Suddenly I become get into an inferiority complex. That's the only thing which is the problem here. So otherwise I'm very happy being here, and I'm a bachelor by the way, and I've never been married officially. So this place is just right for me. I always used to tell people used to scare me saying, hit on you people, hit upon you. So I think now it's that aging is not going to be so terrifying for me. In fact, I went to a graveyard nearby in the Vispa Valley. So there's a Phoenix group which redid that graveyard. Graveyards are normally grey and horrible buildings, unpainted.
So you go there, you get scared of dying, you know, you don't want to be landing up in a place like that. So this guy got some modern art people to change the whole thing, you know, he made them, some of the buildings like a tilted thing. And then in some religions, they even scare you further with hell and heaven. So you don't know whether you're going to make it to heaven if you don't, you're sunk like. So the spiritual thing is a very fantastic thing, and I think if you're comfortable in this world, that's what matters. What happens, you can take it as the next step and see how it comes. So if you get a lot of solace here, and here I can feel a lot of peace in the air, and you can breathe it. And like one of the ladies here, she mentioned about breathing in the peace. So I'm halfway there, and I think if I make few more visits, right now I've just been nominated as a Nizam. So that's more of a job of looking after my family. Some of them are very, very poor, and they don't know how to look after themselves because they were not trained to take care. They have a lot of property, but they don't know how to fight for it. So my first job is not to give them freebies like just spending on gifts for them or sweets for them. Some little bit I'd like to do, but I'd like to use that money for their own future, like fight for their cases, you know, get the things on track in courts and all that. And they own phenomenal amount of properties. It's unbelievable. I thought I own properties, but what they own is like, and they're poor people. One of the guys who came to me is an air condition mechanic. So his grandfather, who's not even the Nizam, he's one of the Nizam's brothers, nephews or something. The land he owns is about 3,200 acres. There's one place in Maharashtra, because I was the biggest state, I suppose. So that was my family, because I lived in Delhi 10 years. I did work for the police there, for saving children on motorcycles skidding on the roads. And I discovered they're skidding on the road because of that oil. The buses, you know, the diesel is not exactly like petrol. Petrol evaporates completely. When diesel evaporates, it leaves a residue. And that oily residue in rain and all that, it was causing them to, you know, skid and go out of control. And the police would go up and pick up dead bodies. 10 days later, there'd be again dead bodies. And the police was having a conference on how to fool the press into reducing the casualties on the road. Trying to say, okay, this guy fell before he reached the road, he just fell outside his gate. I said, it's not doing all that, lying to the press. Why can't you just do something? So about 11 years I was advisor to traffic police, because that time the commissioner was from Hyderabad. His grandfather was a governor under my grandfather was a Nizam. His name was Raja Vijaykaran, who was a police chief in Delhi. And then later he became CBI chief. But रौनक जी का यहाँ भव्य रूप से स्वागत हुआ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले साल भाई साहब यहाँ आए थे। इनका हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय से परिचय हुआ और इनको परमात्मा की तरफ से वरदान मिला कि आप फिर से निज़ाम राजा की तरह प्रिंस बनेंगे, और हमने इनका प्रिंस की तरह ही स्वागत किया था। तो आज बहुत खुशी है कि उन्होंने उस दुआ को स्वीकार करके यहाँ पर प्रिंस के रूप में आप इस तरह अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए औरों के जीवन को भी सुखी बनाने की प्रेरणा देते रहें, और आपके दिल में सभी के प्रति प्यार दया भाव है कि कैसे सभी अपने जो भी परिवारजन गरीबी में हैं उन्हें भी उनकी जो जायदाद है कैसे भी करके जो कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, मैं खुद जिम्मेवारी लेता हूं कि अपने परिवार को भी फिर से एक सुखी परिवार के रूप में। After it's an international organization. This is only just one of the branches in Hyderabad. Other places also in India, and they are very organized, very spiritual people, and they have a community where all of them are single. The ladies are single, and other people come and go on a day-to-day basis. But the residents here in this community are single, and they've taken a liking for me because I too am single. I've never been married before. And I don't have much of an intention, but I was scared because people used to make me feel afraid that I'll get lonely in my old age. But coming in, meeting these people and finding the amount of love I get, and it's a genuine love, because I wasn't a Nizam when I came here. I mean, I've been dominated as a Nizam by my family after they kind of blessed me coincidentally. And when I came here earlier, I was almost like an ordinary person from a royal family, that's all. The amount of genuine love they gave me was amazing, and half the fear of being alone in my old age and all that disappeared, because I think now I kind of, in my back of my mind, I have it
that I will come and settle here if I need to be with other people and genuine people. I mean, there's no point being with someone who's waiting for you to die or to kill you for your whatever, for your wealth or anything. So I find a lot of solace by coming here, and this is my third visit here. And I think now I'll learn a few lessons from them to even look after my own family, which needs taking care of, because all the Nizam family is not very comfortable in different ways. They have a lot of property. They're extremely property rich, but they don't know how to organize themselves or they don't have the funds to pursue it. So my job is to do that. So right now I'm a little short of funds because I have to launch those people into a situation, and tomorrow, if that succeeds, there'll be enough for everyone, enough for this community, because I feel this is my family. In fact, I met some of my family who's doing well. They don't live in India. So I was comfortable, so I never met the other side of the family, which were average people. And I met Brahma